Hello friends, welcome once again. Now 3-4 days back I got a call from Nagpur, and it was from a candidate who was a graduate entry, actually engineering entry, who had gone to the SSB 7 times, twice taken coaching, once from Nagpur and other time from Chandigarh. And of the 7 attempts, 3 times conference out, rest of the time screened out. And he was following AFOSOP videos, but somehow for the purpose of his training he chose some other academy at Nagpur and then at Chandigarh. And after 7 attempts he called me and अपनी कहानी सब बता के बोला, sir, I am not able to achieve my goal, and this is the way my performance was in the SSB, and I'm very passionate to join the armed forces and I don't know what should I do. तो मैंने पूछा, यार तुमने तो ऑलरेडी 2 बार कोचिंग लिया हुआ नागपुर और चंडीगढ़ में, तो अभी दोबारा मुझसे बात करने का क्या मतलब है? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एसएसबी. देन ही सेड कि सर मैं आपका वीडियोस देखता था, बट मुझे ऐसा लगता था कि आपके वीडियोस को समझ में आता था, बट ऐसा लगता था उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सम वे सो दैट लेस एफर्ट्स में मैं रेकमेंड हो जाऊँ. आई सेड ये तो एक फंडामेंटल कॉज इफेक्ट के अगेंस्ट है आपका ये सोच. सो वो सब कुछ समझ रहा था बिकॉज मेरे वीडियोस को तो देखता था, बट अगेन माइंड वॉज स्ट्रक विथ कोई सर शॉर्टकट मिल सकता है सर. तो मैंने कहा 2 बार तो तेरे को मिल गया है. आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू हिम बिकॉज वो बड़ा क्लियर था कि ही वॉज लुकिंग फॉर शॉर्टकट. तो मैंने फिर स्वामी विवेकानंदा का ये बुक है, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, दिस इज हिज वॉल्यूम वर्क, और उसका पेज 1 आई शेयर्ड विथ हिम विच रीड समथिंग लाइक दिस. दिस इज द पेज 1. मैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ को सेपरेट करके मैं पढ़ता हूँ. So I explained it to him. He listened very carefully and he was understanding also, but he was not willing to apply what is written here. And it says, work and its secrets. One of the greatest lessons I've learned in my life is to pay as much attention to the means of work as to the end. End is your goal. 2 stars on the shoulder, getting recommended from the SSB. And it says, I have learned in my life is to pay as much attention to the means of work. Means of work matlab the method or the preparation or the approach to your preparation that will lead to your good performance in the SSB, that will ultimately lead to your recommendation. So इसका जो लास्ट लाइन है, I have been always learning great lessons from that one principle, and it appears to me that all the secret of success is there, to pay as much attention to the means as to the end. So the means is the method you employ to achieve your goal. In this case, your goal is clearing the SSB, and the means is how do you build yourself in terms of development of your own self and understanding the SSB testing tools. In this case, this candidate was stuck in the SSB testing tools that also highly manipulated. Weakness को छुपा दो, core quality को hide कर दो. So the problem with him was he wanted to achieve the goal without paying attention to the means, and he wanted shortcuts in the means process में. So the next paragraph reads, our great defect in life is that we are so much drawn to the ideal. Ideal is the goal or the final outcome. Ideal, the goal is so much more enchanting, so much more alluring, so much bigger in our mental horizon that we lose sight of the details altogether. So SSB का recommend होने की इतनी बुरी तरह छटपटाहट, इतनी बुरी तरह से इसकी चाहत और ऑब्सेशन कि उसको पाने की विधि पे ध्यान नहीं दे रहे. वी आर नॉट बॉदर टू अंडरस्टैंड कि वो 3 लोग 5 दिन एक कैंडिडेट में देख क्या रहा है. द एंटायर ट्रेनिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू
OAR, PPNDT, Stage 1, उसके बाद TAT, WAT, SRT, GTO, फट्टा बल्ली, CIQ, PIQ के अंदर उलझा दिया. So what is the syllabus of SSB? Is it GTO Psych interview? Is that the syllabus? No. The syllabus of SSB interview is your life. और आप उसे ठीक किए बिना आप TAT में उलझे हुए हो. So that's a problem, and that problem was there in this candidate as well. The last paragraph of the first page reads, but whenever failure comes, if we analyze it critically, in 99% of the case, we shall find that it was because we did not pay attention to the means. So अगर आप नॉन रेकमेंड हुए हो, नॉन रेकमेंड होना एक परिणाम है उस कारण का जो कि आपने प्रिपरेशन में किया या नहीं किया. And it says, proper attention to the finishing, strengthening of the means is what we need. So means पे ध्यान देना है. We'll see that. With the means, all right, the end must come. कितना बढ़िया लाइन है. With the means, all right, the end must come. But when the means itself are manipulated, core quality को छुपा दो, suicidal tendency को छुपा दो, dead body का ड्रामा कर दो, this means are not correct. So the end itself will be incorrect because the means are wrong. We forget that it is the cause that produces the effect. We forget that it is the cause that produces the effect. The effect cannot come by itself. आप effect को लाना चाहते हो बिना कॉज प्रोड्यूस किए. आप एक उस किसान की तरह बिहेव कर रहे हो जो खेती नहीं करना चाहता, धूप में काम नहीं करना चाहता, गुड़ाई नहीं करना चाहता, पानी नहीं डालना चाहता, खाद नहीं डालना चाहता, लेकिन अच्छी फसल की उम्मीद करता है. दिस वॉज द फ्लॉ इन दिस बॉय. एंड अनफॉर्चुनेटली दो कोचिंग, वन एट नागपुर एंड वन एट Chandigarh, it only told him how to correct his TAT, WAT. टिप्स एंड ट्रिक्स, GTO का फट्टा बल्ली कैसे करते वो सब सिखा दिया, बट खुद को कैसे ठीक करना वो नहीं सिखाया. Once an ideal is chosen and the means determined, we may almost let go the ideal because we are sure it will be there when the means are perfected. लेकिन हम लक्ष्य से ऑब्सेस हो जाते हैं. Next it says, when the cause is there, there is no more difficulty about the effect. The effect is bound to come. The probability of getting recommended from the SSB will be very, very high when you take care of the way you prepare yourself and you understand the SSB testing tool. यहाँ दोनों नहीं हो रहा, ना सेल्फ का डेवलपमेंट ना SSB की सही समझ. The realization of the ideal is the effect. The means are the cause. Attention to the means, therefore, is the great secret of life. This is not only relevant for SSB, this is relevant for life. So this is okay. So this was, yeah. Now, if you want to see more on this, you can go to the AFOSOP channel on the Graphy platform. And to go there, you can use this link, Colonel Ganesh Babu 1111.ongraphy.com/s/store. The link is also given in the description box. Once you go there, you will find 2-3 courses, and one of them is Introduction to the SSB Interview Process. This is completely free. You can register for free, and वहाँ जाके you have to watch certain videos. In case if you have problem in accessing that, you can contact me at 9090099035. Send me a WhatsApp with your problem that you're facing, and I'll help you to correct it. And go and watch this video, Right Strategy to Prepare for the SSB Interview. एंड यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के इस पूरे जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, एंड इट्स बीन मॉडल ऑन द प्रिपरेशन फॉर द SSB इंटरव्यू. उसे देख के जरूर फीडबैक देना. द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल सजेस्ट टू वॉच इज बिगिन विद द एंड इन माइंड. Begin with the end in mind. End is the recommendation from the SSB, and then the process is the various means that you adopt to get over whatever challenges that you encounter in the process. And one more video is how to set goals and achieve it. So यहाँ पे इस लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा, that is also how do I achieve my goals. So it is very clearly explained there. I request to watch that and do post your comment both on the YouTube channel. You can also share it on the WhatsApp
नंबर पे भी. There is one book which is by the name What Got You Here Won't Get You There. This is by Marshall Goldsmith. Read it. A very good book, small book, and it tells you कि आप जिस काबिलियत या जिस योग्यता के ऊपर अभी कहाँ जहाँ पे भी पहुँचे वहाँ पहुँचे हो, उस योग्यता को रखते हुए ऊपर नहीं जा सकते. आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा. काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी आपकी. Something on those lines. What got you here won't get you there. So don't try tips and tricks. Enhance yourself. So the boy said, sir, आपके पास आने से क्या फ़ायदा होगा? This is my third coaching. मुझे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा. Yes, पैसा तो आपने पहले भी खर्च किया, लेकिन उस पैसे के खर्च करने के बाद में आपने जो tips and tricks लिया, they did not help you to develop. In fact, there are coaching centers who say, we don't coach, we transform. अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जो वो करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस. नाउ AFOSOP में द अप्रोच इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. जिस तरह से कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, इट गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस. सेम उसी तरीके से जैसे गिफ्ट है, तो गिफ्ट रैपिंग ठीक करने से गिफ्ट ठीक नहीं होगा. गिफ्ट को अगर ठीक किया तो गिफ्ट रैपिंग थोड़ा कमजोर भी हो चलेगा, बिकॉज द गिफ्ट इज गुड. So total self-transformation. For the purpose of definition, total self-transformation is not just about changing yourself from the outside. ऊपर के मुखौटे को चमकाना नहीं है. That's not the aim of total self-transformation. Total self-transformation means shifting yourself to a completely new dimension of experience and perception. Now this is why ये लड़का मेरे वीडियोस को देखता था, समझता भी था, लेकिन उसको इससे डर लगता था क्योंकि इसमें कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है, प्रोसेस से घबराता था. तो अगर आप इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है और आप उस लक्ष्य के लिए अपने आप को ढालने ही नहीं चाहते हो, उससे ही घबराते हो, देन हाउ विल यू गो थ्रू दिस? देन यू से कि 7 बार गया हूँ सर, मैं रेकमेंड नहीं हो रहा. सो नो, यू विल हैव टू, when you watch the videos, you will realize that these videos are compelling you to think, because it is shifting yourself to a completely new dimension of experience and understanding of SSB, and your perception towards SSB is changing. 6 blind men and the elephant. हर अंधा एलिफेंट को अलग अलग तरीके से देखता था और समझता था, बट देन असली एलिफेंट तो उनकी समझ से बहुत ही अलग था. सो दैट्स अप्रोच दैट यू डू. एंड इसको समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि SSB इज़ अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन, एंड पर्सनालिटी के 4 डायमेंशंस है, और उन 4 डायमेंशंस को एसेस करने के लिए SSB के 3 टेस्टिंग टूल, मानसा, वाचा, कर्मना, एंड द 4 डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी कुछ उसी लाइन के ऊपर जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, ग्रुप्ड अंडर 4 फैक्टर्स. फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस, एंड फैक्टर 4 डायनेमिक फैक्टर्स. सो दीज आर दी OLQs. नाउ दीज OLQs कैन नॉट बी एक्टेड नॉर दे कैन बी डायरेक्टली डेवलप. इनको डेवलप करने के लिए आपको पर्सनालिटी के वो 4 डायमेंशन को समझना पड़ेगा, जिसको कि मैंने एक कार से कंपेयर किया विद 4 टायर्स. तो कार के 1 टायर 2 टायर को देखने से नहीं चलेगा. ऑल द 4 टायर हैज टू बी वर्कड अपॉन, एंड दे हैव टू बी equally maintained so that the car runs in balance. So balanced personality. So let's see what are those various factors. So first level and the lowest level is the physical quotient, है ना. So your diet, what food you take, and how much you take, exercise, walking, running, climbing, games and sports that you play, physical activities that you undertake to keep yourself fit, and co-curricular activities that you take. A lot of things are available in the PIQ, and there are 2 tasks that are specifically designed for this. That is group obstacle race and individual race. जहाँ पे individual obstacle race, जहाँ पे physical dimension is predominantly tested in the GTO. बाकी अदर तो CIQ PIQ में जो भी आपने लिखा है बोलोगे उसके ऊपर है, राइट. सो फिजिकल, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. दिस इज ओनली 1/4 पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट, बिकॉज द 3/4 आर द अदर 3 पार्ट्स. सो व्हाट आर द अदर 3 पार्ट्स? द सेकेंड लेवल इज योर इंटेलिजेंट क्वोशंट, जो कि OLQ की भाषा में फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. इसके अंदर 4 OLQs है इन दिस सीक्वेंस: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन. Now इसमें reasoning ability is called the mother of all OLQs. So when you come to the AFOSOP, the predominant emphasis of the many areas, one will be reasoning, high degree of analytical thinking skills, critical thinking skills. Reasoning can be developed. Many cases it is
clouded because of our poor education system that we are put through. Three idiot, chamatkar pe chamatkar. So reasoning, yes, if your IQ is it's low, then it becomes challenging. But in case of average IQ ke log, रीजनिंग स्किल कैन बी डेवलप टू अ पॉइंट वेयर वॉट एवर इज सप्रेस है उसके ऊपर जो कोट लग गया हमारे एजुकेशन सिस्टम जो हमें सोचने से वंचित रखता है, इतना तो कर ही सकते हैं कि एसएसबी का रिक्वायरमेंट को तो हम कर ही सकते हैं इन मोस्ट केसेस, है ना. इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ऑल दैट. नाउ इसे डेवलप करने के लिए इन चार जो OLQs को डेवलप करने के लिए यू कैन नॉट डेवलप रीजनिंग सेपरेटली, इफेक्टिव सेपरेटली. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटेलिजेंस को दो भाग में बांटा जा सकता है ब्रॉडली. वन इज द बेसिक इंटेलिजेंस जिसको कि हम एकेडमिक इंटेलिजेंस भी बोला जा सकता है और जिसके अंदर आपका OAR टेस्टिंग वगैरह होता है. उसके अलावा इसी में आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जीके एंड ऑल दैट. सो लेट्स कॉल इट बेसिक इंटेलिजेंस, द फर्स्ट differentiation. The second differentiation is the problem solving skill. Now, basic intelligence में general awareness को भी ले सकते हैं. Just for example, your awareness about your current affairs, international affairs, international organization, geopolitical developments that is happening, defense related knowledge, sports, games, miscellaneous, इंडियन सोशल इश्यूज, ऑल दोस थिंग्स के ऊपर बात होती है. तो ये सब चीज़ें जो आपको अवेयरनेस में आ सकता है. दोनों को 1 and 2 को क्लब करके यू कैन कॉल इट द एकेडमिक इंटेलिजेंस, द बेसिक इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग OAR. The more important and what is more emphasized in the SSB is the problem solving skill, which is the second function of the intelligence. First function academic intelligence, many of you are good. Now problem solving skill में problem solving skill, observation skills, analytical skills, root cause analysis, critical thinking, creative thinking, evaluation of option, conflict resolution skill, decision making skills, implementation skills, and setting the goal and achieving it. All those things are various factors that you have to develop. Now, once you develop, your overall IQ enhances. When your IQ enhances, the factor one qualities, EIRA, OA, and POE, they also, in effect, get improved. So, आपको पता YLC, Young Leadership Course, OTA चेन्नई में चलता सर्विस एंट्री केसेस के लिए 5 months का कोर्स है जो कि 2019 में जनरल बिपिन रावत के टाइम पे हुआ था. हु इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, गॉड ब्लेस हिज सोल. So army trained jawans. Now if you read the article, newspaper article, the focus of this YLC, apart from physical fitness and mental robustness, will be on developing leadership traits. तो आपके 14 days के SSB के मॉड्यूल में लीडरशिप ट्रेट डेवलपमेंट नहीं है, सब TAT, WAT, SRT वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड है. नेक्स्ट कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण. चरित्र के निर्माण के बिना व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता. तो कैरेक्टर बिल्डिंग, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, बिल्कुल. पब्लिक स्पीकिंग स्किल, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. Learning conflict management and resolution skill. Now, conflict management is part of the problem solving. Decision making and problem solving. And besides that, soft skill training. Soft skill is concerning your factor 3 qualities that are, factor 2 qualities, that is social adaptability, cooperation, and sense of response. उसके बारे में आगे बात करेंगे. Now you can get the entire YLC का syllabus on the AFOSOP Graphy के channel पे, YLC syllabus. So please go and read that. There are 2 videos on that जिसमें कि YLC के 5 months में क्या क्या करवाते हैं और कहाँ पे उसमें emphasis ज़्यादा है और किस चीज़ को कब किया. You'll realize कि leadership and personality development में almost 80% emphasis है. Just 10 to 20% is on the SSB procedure. लेकिन in case of conventional coaching, the first part is completely missing और पूरा SSB के testing tool पे process बता के आपको छोड़ देते हैं, which is very very incorrect way of training yourself for such a competitive examination. So YLC का syllabus जरूर देखना. Now, for the purpose of understanding why problem solving is so much important for both life and SSB and in any level of leadership, you cannot be any leader if you cannot solve problem. So problem solving, for the purpose of definition, problem solving is the act of identifying and defining the problem. Identifying and defining the problem, determining the cause of the problem. Next is identifying, prioritizing, and selecting alternatives, that is options for a solution, selecting the best option and implementing a solution and thus achieving the goal. Now, इसको मैं 3 part में divide करता हूँ. The first part is problem solving is the act of identifying and defining a problem and determining the cause of the problem. ये TAT के what led to the situation के साथ align होता है. सो TAT में जब व्हाट लेड टू द सिचुएशन पूछते हैं, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट आपको उस दिए हुए पिक्चर को देखकर आपने उसको
आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, डिफाइन करना है, डिटरमाइन द कॉज, व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, वो क्या कॉज है, वो क्या कारण है जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। सेकेंड पार्ट बोलता है identifying, prioritizing and selecting alternatives यानी options for a solution, selecting the best option, this is called decision making, and implementing a solution, this is called implementation. You have to organize it and implement the decision that you've taken. So identifying, prioritizing and selecting alternatives, this is TAT का second step, what is currently happening. This is the problem solving step. The first step, what led to the situation, is problem identification and defining the problem. And the last part is, and thus achieving the goal. This is the final outcome that you set for yourself. And the second part, that what is currently happening, is the means adopted to achieve. स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि गोल को फिक्स करने के बाद पूरा ध्यान मीन पे दो। अगर मीन्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका TAT तो छोड़ो, आपका पूरा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग विल गेट करप्टेड। सो दैट्स अ सीक्वेंस। सो अगर ऊपर का फोटो देखो, प्रॉब्लम के बारे में सोच के डिफाइन करके उसको जब आइडेंटिफाई करोगे, देन यू थिंक एंड देन यू कम विद अ सोल्यूशन। सो मानसा को अगर सही कर दिया तो उस सही मानसा से निकलने वाली सोच डेफिनेटली एक वैल्यू बेस्ड सोच होगा, एक अनकरप्टेड सोच होगा। सो दैट्स अ एम। सो इफ यू लुक एट दिस, कि अगर आपको TAT दिया, ये 12 पिक्चर आपको TAT में आपके सिर के अंदर डाला जाता है आंखों के थ्रू, एंड देन यू रेस्पॉन्ड। और ये पूरा का पूरा जो व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ये होता है, ये आपके मानसा में होता है, विच इज़ द इनर प्रोसेस। तो अगर इनर प्रोसेस को गंगोत्री मान ले तो जो रेस्पॉन्स है वो गंगा। तो हम कोचिंग में क्या कर रहे हैं, हम गंगा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्पॉन्स ठीक कर रहे हैं, TAT WT SRT। नो 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 नो, गंगोत्री साफ करो। जब गंगोत्री साफ हो जाएगा, उससे निकलने वाला TAT WT SRT GTO फट्टा बल्ली अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सो गंगोत्री इज द इनर प्रोसेस, आपकी सोच, गंगा उससे उत्पन्न होने वाला रेस्पॉन्स। तो विल हैव टू शिफ्ट आवर फोकस ऑन ट्रेनिंग फ्रॉम गंगा टू गंगोत्री। क्या समझ में आया गंगा एंड गंगोत्री, मुझे जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में बताना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ तो आप इस पिक्चर को आंखों से देखोगे ना। आई एम आस्किंग यू 3 क्वेश्चन, what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome. So number of characters, gender, age, mood, उनका dress, उनका body language, non-verbal communication, emotional expression, everything you have to define. Whatever is the situation, what made this situation to happen. So इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और वीडियो देखने के लिए बोलूँगा, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का AFOSOP का चैनल पे। उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड देन वंस यू अंडरस्टैंड दैट, देन पिक्चर्स को इन TAT को हैंडल करना आसान हो जाएगा, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देयर आर 7 स्टेप्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब इन स्टेप्स की क्लैरिटी आएगी, इन स्टेप को ऑल यू हैव टू डू इज अप्लाई इट इन लाइफ, and once you become expert in applying it in life, automatically it will happen the SSB, because SSB is a subset of life. So इस वीडियो को देखना डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो देखना डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। इसके अंदर एक सर्प दृष्टि एंड गरुड़ दृष्टि का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। और इसके अलावा इसमें एक थिंकिंग, overthinking and hypercritical thinking and depressive thinking, and उसके आगे जो कुछ भी सीक्वेंस बताया। So overthinking is not problem solving. Thinking, critical thinking is important, but overthinking is not problem solving. So if you have problem of overthinking, इसका मतलब आप सर्प दृष्टि में अटक रहे हो, आपको सर्प दृष्टि से निकल के गरुड़ दृष्टि में शिफ्ट करना है। वो कैसा है इस वीडियो में मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, और पिछला वीडियो जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसको जरूर देखना। नाउ द थर्ड फैक्टर, एंड OLQ की भाषा में फैक्टर 2, सोशल एडजस्टमेंट, एंड in terms of the 4 dimensions of life, it is factor level 3, that is emotional quotient, SSB की भाषा में social adjustment। 3 OLQ है, social adaptability, cooperation and sense of responsibility। ये आपके interpersonal skills या soft skills कहलाते हैं, कि आप कैसे एक टीम में लोगों के साथ व्यवहार करते हो। तो इसको डेवलप करने के लिए there are 5 areas that we have to work, and those are self awareness, self-regulation, social awareness, social regulation, and internal motivation. For example, when you are not self-aware, how can you describe the self in SD? Can you describe the self when you don't know the self?
वीडियो भी है एफोसोप ग्राफी चैनल में, उसका नाम है सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस। और दूसरा वीडियो अगेन डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। एंड यू नो एक देयर इज एन आर्ट ऑफ कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस। So connect is an emotional skill, convey is an intellectual skills, and convince is at the level of consciousness। कि जब मैं मेरी बातों से आप सहमत होंगे तो आप इन्फ्लुएंस होंगे, आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे, आप मेरे इन्फ्लुएंस प्रभाव में आओगे। लेकिन अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो आप मेरे प्रभाव में भी नहीं आओगे। सो द आर्ट ऑफ कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, उसका थोड़ा सा रेफरेंस इसमें दिया हुआ है, प्लीज वॉच इट। एंड द लास्ट इज the level 4 or the fourth tier is value quotient, or the spiritual dimension of your existence or your strength of character. You can work out of values or you can work out of anti-values. So one video that I'll ask you to watch is values for leadership excellence. वो SML वाले वीडियोस में है, values for leadership excellence, उसको देखना, it'll help you to understand ये क्या है। So these are the 4 areas where to work। and आपको पता है इंडियन आर्मी के भी कुछ कोर क्वालिटीज़ है, कोर वैल्यूज़ है, जैसे करेज, ऑनर, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, ड्यूटी, ऑनर, करेज, इंटीग्रिटी, मिशन, एक्सेलेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। एंड इफ यू सी आई एम ए क्रेडो, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety come last, always and every time. Now this is very, very demanding. This can only be, walked when you believe on this, and when you have some principles, some values are very strong that helps you to be aligned on this. I'm a credo. It's not easy. It's not easy. इसीलिए कपूरथला के कर्नल साहब जो आपका रिश्वत में पकड़े गए, देखो अभी एक टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के एक टीएमसी की एमपी फंस गई है, महुआ मित्रा, है ना, बहुत अंग्रेजी बोलती थी, बड़ी बड़ी बातें बोलती थी, 2 करोड़ रुपए ले रखे हीरानंदानी साहब से, पैसे लेके संसद में क्वेश्चन पूछे, आपको पता है ये केस चल रहा है। तो ये सब क्या है, लैक ऑफ इंटीग्रिटी। सो बहुत सारे कोचिंग भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वीडियो में, दे आर डूइंग गुड बिजनेस बट दे लैक इंटीग्रिटी, दे लैक इंटीग्रिटी। सो दीज आर द 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसे डेवलप करना है, क्योंकि वो लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। उसको टेस्ट करने के लिए एसएसबी के 3 टेस्टिंग टूल, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ, इंटरव्यू। हम टीएटी, डब्ल्यूएटी में उलझे हुए हैं, बट टेस्ट तो ये कर रहे हैं। सो इसे ठीक करना है ना। जब इसे ठीक करोगे तो ये 15 ऑफिसर क्वालिटी खुद ही निखरना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उसे छोड़ के OLQ के पीछे पड़े रहेंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सो टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स शिफ्टिंग योरसेल्फ टू अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। सो आपको 4 स्तर पर बदलना है। 1 इज बिहेवियरल लेवल पे, उससे आपका एक्शन पे बदलाव आएगा। 2nd इज इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उससे आपकी समझ बढ़ेगी। जैसे अभी मैं आपको इंटेलेक्चुअली समझा रहा हूँ, तो मैं आपके लेवल 2 पे हिट कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। इमोशनल लेवल पे भावनात्मक पहलू, इमोशंस, बी पॉजिटिव लिख दिया, रोते हुए लड़की को भी बी पॉजिटिव क्योंकि एसएसबी जा रहा हो, नो, that's showing lack of emotional maturity. So emotional understanding and thought level पे consciousness, चित्त पे, that's the highest level. Highest level गंगोत्री को बदल दिया तो lowest level अपने आप क्लियर हो जाएगा, because energy flows from higher potential to lower potential, and thought level correction is the highest level. आपके जो faulty beliefs है उसको, अब सवाल आता है इसको करना कैसे है। इसको कैसे करना है वो मैं आपके फीडबैक के आधार पर पार्ट 2 में करूँगा। तो आपको कुछ वीडियोस का रेफरेंस जरूर बता सकता हूँ। 1 इज कि यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। आप अभी जिस चाल पे चल रहे हो, जैसे इस लड़के ने कॉल करके पूछा था, वो भेड़ चाल में चल रहा है। ही इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट टू सक्सेस एंड ही हैज गॉट 7 times नॉट रिकमेंडेड। एंड नाउ उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गया, पेरेंट्स से भी शायद प्रेशर है कि कुछ और क्यों नहीं कर लेता, और ये इसके पीछे लगा हुआ है। यू हैव टू ब्रेक द कंफर्ट जोन। सो अगेन दैट बुक जिसका मैंने पहले मेंशन किया था, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर, यू हैव टू चेंज। एंड उसको चेंज करने के लिए एफओसोप ग्राफी चैनल में एसएमएल का जो कोर्स है उसके अंदर एक वीडियो है, एसएमएल माइंड मैटर्स, इट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। एक और वीडियो है जो कि एसएसबी वाले उसमें है, वो है परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इम्प्रूव सिलेक्शन। वॉच इट, इट विल चेंज द वे यूर थिंकिंग। एक और वीडियो, बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स,
बिवेयर ऑफ एक्सपर्ट्स, एक और वीडियो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। तो ये सब जब देखोगे आपका एक परसेप्चुअल शिफ्ट आएगा और आपको समझ में आएगा कहाँ पे काम करना है। Next is how to break your comfort zone. We are all stuck in comfort zone, including the boy who called me. He wants to achieve success, but he doesn't want to work. वो किसान खेती नहीं करना चाहता लेकिन फसल अच्छी चाहता है। This equation must break. So, अगर आप इसको मेरी मदद से करना चाहते हो तो 2 weeks का AFOSOP ऑफलाइन कॉम्पोजिट वी कंडक्ट, जहाँ पे फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, वैल्यू क्वेश्चन, इन सब के ऊपर विल आइडेंटिफाई द डेल्टा, दैट्स अ गैप, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस एंड ELP एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस के बीच में। एंड इसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के टूल्स अप्लाई किए जाएंगे। सो द ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द weightage will be on development of the 4 dimensions of your life, and then once it is clear, we'll apply the same thing on the SSB testing tool, that's psychological test, GTO and interview, of course stage 1 included, and we will see gap in both कि पर्सनालिटी में क्या गैप आ रहा है और एसएसबी के परफॉर्मेंस में टेस्टिंग टूल पे क्या गैप आ रहा है, एंड विल करेक्ट द पर्सनालिटी के गैप्स को फर्स्ट so that the gaps here gets filled, और जहाँ जहाँ पे इस पे करना वो भी करेंगे. So the work will happen at 2 level, at the level of personality and understanding testing tool. इन दोनों को जब एक balance create करेंगे, then you will realize your performance is going high. So this will be a fully residential batch, and the availability of next batch is under November में there are 2 batches available. The batch 1 will be held at Aurangabad, Maharashtra में, and the duration will be from 30th October to 12th November. Reporting date will be on 29th October at Aurangabad. इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूजुअल नंबर नहीं है, एक दूसरा नंबर है, बिकॉज दिस इज बी हैंडल्ड बाय सम अदर एजेंसी. सो यू हैव टू call at 9637359595. You can call oblique WhatsApp and you can ask them to share the details for the 30th October batch, जिसका की reporting is on 29th October. They will give you the details. And उसके अलावा जो batch 2 है, that will be at साहस द कैंप नागपुर, जहाँ पे already batches चल रहा है. And the next batch at साहस द कैंप नागपुर will be from 20th November to 2nd December 2023. The reporting will be on 19th November. और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो पुराना नंबर ही है, 9090099035. And please contact us and we'll get back to you with the details. So these are the 2 batches available in the month of November. पहला batch 30th October to 12th November, and next batch 20th November to 2nd December. For any clarification or if you have any issue with the registration process, you can contact me at 9090099035 and I'll assist you in getting the process easier. Now जरूर कमेंट लिख के मुझे बताना कि क्या समझ में आया, and have you understood there are 2 parts to your entire training. One is building the foundation of your personality, and second is understanding the SSB testing tool and then aligning the two so that both are complemented, and एक को छोड़ के दूसरे को मैनिपुलेटिव तरीके से नहीं करना. सो जरूर कमेंट लिखना, अगर आपके कोई क्वेरीज है तो वो भी डालना, and you can contact me at the given number, and we can see how can we help you in total self transformation. That means self is not about just changing yourself from the outside. It means shifting yourself to a completely new dimension of experience and perception. SSB की एक समझ ही बदल देंगे, and this is possible. Thank you and may God bless you. Thank you very much.